You will have 3 different processes that you'll go through. हफ्ते का या 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं और इसके बाद वो इंटरव्यूज के लिए डेट्स देते हैं. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Premed Podcast. I am Musaba from Madangal Premed, and today we are here with the first episode in our post MDCAT series, that is our Beyond MDCAT, the way forward. In this series, we will be talking. In this episode of our series, we will be talking about the admission processes in Sindh, KPK, and Balochistan. We will be holding a special episode for you for Punjab, and now we will move ahead with speaker introductions. Abia, can you please introduce yourself? Alright, Assalamu alaikum everyone. My name is Abia Khalid Mee and I'm a first year MBBS student in Dow Medical College in Karachi, Sindh, and my MDCAT score was 171 out of 200. Over to Moise. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइज है और मैं बीएमसी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ. लास्ट ईयर मैंने 171 स्कोर किया और बलूचिस्तान में 3rd पोजीशन हासिल की. Assalamu alaikum everyone. My name is Elshpa Khwaja and currently I'm studying at Hyper Medical College MBBS first year and my MDCAT score was 180 out of 200. Okay, so just by your introduction, we know that you guys are studying in the top medical colleges of all provinces. So just before we start with the boring details of admission, कब होता है, documents कौन से required होते हैं, form कैसे fill करना होता है, I would just like to hear your opinions on the MDCAT conducted this year. Like we know कि थोड़ा difference होता है सब provinces के patterns के अंदर, MDCAT के अंदर. यहाँ पे इस दफा दोबारा there was a speculation that there's been a leak, and we did give, Abia and I are in the same batch. हम लोगों ने last year MDCAT दोबारा दिया था. So I know what the Premed would be feeling right now. So I would love for you guys to talk about कि इस दफा जो MDCAT हुआ है उसमें आप लोगों के क्या views हैं? Like how is it different from other provinces? So Abia, you can go first. Alright, so MDCAT in Sindh is दफ़ा it was conducted by Dow University of Health Sciences, DUHS, right? और हम लोगों ने वही pattern देखा था जो पहले आ रहा था. It's basically, you know, a mixture of like book lines and some numerical based questions in physics and chemistry. Nothing too fancy. वही हमारा 20-60-20 rule है for like easy and then medium and then hard. Yes, there are a few MCQs that are out of syllabus, but I would recommend not to worry about that. अब जो होना था वो हो गया है, and now you should just focus on your admission process. And yeah, that's pretty much it about the MDCAT. तो बलूचिस्तान में ऐसे होता है कि अक्सर हर साल जो टेस्ट होता है उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है हर साल, और इसीलिए जो लोग हैं वो ज्यादातर केपी में और पंजाब में और फेडरल में टेस्ट देने को ज्यादा प्रेफर करें. और यही वजह है कि यहाँ पे मेरिट भी इतना कम होता है. और दूसरी बात ये कि यहाँ पे प्रॉपरली वो फॉलो नहीं किया जाता जो 20-60-20 की रेशो है ना, कि इधर जो है ऐसे होता है कि 20 डिफिकल्ट, 20 इजी, 60 डिफिकल्ट होते हैं और 20 मॉडरेट होते हैं. मतलब तो बस ये है यहाँ पे. Okay, that must be really difficult if there are 60 difficult questions in one paper. That must be really difficult for Premeds and for you as well. Alishba, we would love to hear about the MDCAT and KPK as well. इस बार जो हमारा मतलब MDCAT का टेस्ट हुआ है वो KMU ने लिया है और रिलेटिवली लास्ट ईयर के मुकाबले बच्चे सेटिस्फाइड हैं और मैंने इतनी कंप्लेन्स वगैरह भी कोई भी नहीं देखी है. कोई MCQs वगैरह पे एक दो जो आउट ऑफ कोर्स होते हैं वो हर साल होते हैं, मतलब वो चीज नई नहीं है तो वो चल रहा है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईटा के मुकाबले जो इस दफा KMU ने टेस्ट किया है वो बेहतर था, मतलब ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह. वो ठीक है सारा. Okay, that's good क्योंकि last time I remember सबसे ज्यादा issue जो है वो KPK के students के साथ हुआ था, and I felt really bad and I blamed as well. I thought कि हमारा MDCAT भी reconduct KPK की वजह से ही हुआ है, and I kept blaming the pre-med in KPK पूरा time जब तक मेरा पेपर नहीं हुआ. So I am really happy कि this time it was done well. बाकी as Abia said, we have to move forward. अब तो exam हो गया तो like reconduct होगा नहीं होगा, that is something we don't know, that is uncertain. So we should move forward and we should focus on our admission process. Now coming on to that, सबसे पहले I really want to ask you guys कि when were you guys called for your admissions? Like we want tentative dates. The Premeds want to know कि admission के लिए कब बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं. So I would love for you guys to talk about कि merit list कब आई थी and when were you guys called, how were you guys called, और वो पूरा process कैसे था, orientations वगैरह everything.
Alright, so in Sindh, हमारे साथ ये हुआ था कि we had our exam on the 19th of November and within a week we got our the merit और हमारा जो result आ गया था. We used to like हम लोगों ने उनकी screenshots ले ली थी so that we could use that as a document या print करवा लिया था. After that, you will have 3 different processes that you'll go through. The first will be an online application. We'll discuss about that later. Then there will be एक हम लोगों ने application form paper पे you have to like send it to the conducting university. In your case, it's DUHS. और वो हमारे पास we do it through TCS, right? And then the third, which was for us, it was on the 31st of December, and that was the seat allocation day. That is the day that you are called. आपके merit के हिसाब से you're called there और क्या कहते हैं आपकी allocation होती है. You submit your documents and stuff like that. For BDS थोड़ा सा time ज़्यादा लगता है because उन लोगों की merit list बाद में आती है, but the admission process relatively stays the same. जी लास्ट टाइम रिकंडक्ट की वजह से, क्योंकि सिंध और केपी दोनों में रिकंडक्ट हुआ था और यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा था कि रिकंडक्ट होगा या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, उस वजह से लेट हो गई थी डेट. लास्ट टाइम 27 नवंबर को एडवर्टाइज किया था एडमिशन्स के लिए बीएमसी ने, मगर इस मरतबा उम्मीद है कि कुछ पहले हो जाए अगर इस दफा कोई रिकंडक्ट या इस तरह कुछ सीन नहीं हुआ. तो लास्ट टाइम इसीलिए लेट हो गए थे. 27 नवंबर की डेट आई थी. उसके बाद आप लोगों को एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, वो लेके जाना होता है. डॉक्यूमेंट्स में वही है, कुछ खास नहीं है, बस आपका डोमिसाइल इधर बहुत लाजमन चेक होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, कोटा वाइज. तो उसमें डोमिसाइल अपना या लोकल अपना जो है वो डीसी से वेरीफाइड हो, वो लाजमी हो. बाकी ये चीजें तो हैं ही, डीएमसी हो गई और ये सीएनआईसी वगैरह. जी बस ये. और अगर बात करें केपीके की, तो केपीके लास्ट ईयर जब हुआ, इसने बात की है कि रिकंडक्ट वाला सारा सिस्टम था, तो लास्ट ईयर की डेट्स तो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, लेकिन इस दफा जो अभी उनका पोर्टल ओपन हो गया हुआ है कि एमयू की 21st को लास्ट डेट है, 5th नवंबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, उसके बाद उसकी जो क्रॉस चेकिंग होगी और 15 नवंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट हमारी अनाउंस हो जाएगी. प्रॉपर स्केड्यूल उन्होंने दे दिया हुआ है और इसके बाद वो इंटरव्यूज के लिए डेट्स दे देंगे जब आपने केएमयू जाके प्रॉपर इंटरव्यू में, और वहां पे सिर्फ आपने अपना कॉलेज और मेरिट लिस्ट वगैरह बतानी होती है. ओके लाइक तो अगर इस बात को मैं समराइज करूँ तो हम लाइक केपीके में बलूचिस्तान में और सिंध में प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है. हमें 2 फॉर्म्स चाहिए होते हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है और एक जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं. और टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फॉर्म, हाउ हेक्टिक वाज दैट? वन मोर थिंग, फिजिकल फॉर्म कोई भी नहीं होगा, आपने सिर्फ ऑनलाइन MBBS के लिए भी और BDS के लिए आपने ऑनलाइन फी पे कर देनी है, वहां पे चालान जो है आपने अटैच कर देना है. कोई भी मतलब फिजिकल फॉर्म या ऐसी कोई चीज नहीं है हमारी. Okay, so that means KPK is advanced in comparison to Dao and Bolan. ठीक है, KP you guys should apply to KPK. You guys should apply to Khyber. ठीक है, यहाँ पे the process we went through last time, it was so hectic कि I just wanted to give up. After giving the MDCAT, I was like, I don't want to do this, and I wanted to give up. It was so hectic और वहाँ पे इतनी लंबी lines. But guys, don't be scared. You have, if you are committed enough, if you really want to pursue your MBBS or your BDS, you can do this. Baki, I just wanted to add one more thing. As Abia said, the process for MBBS and BDS is entirely the same. बस BDS को थोड़ा late होता है, थोड़ी merit list provisional and final थोड़ी late आती हैं, तो like around 2 to 3 weeks later उनका course start होता है. Okay. उसके बाद now that we have talked about the forms, we have to talk about the documents that go on with the forms. ये documents बहुत ज़्यादा important होते हैं, इनको अटेस्ट करवाना होता है, किस तरीके से अटेस्ट करवाना होता है, कौन सा ग्रेड होता है अटेस्टेशन के लिए, कौन सा ऑफिसर होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं. आई एम श्योर द प्रीमेड्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट दिस राइट नाउ, सो आई वुड वांट यू गाइस टू टॉक अबाउट दिस. आबिया, कैन यू प्लीज टेक ओवर? Alright, okay, so documents के लिए we need to understand कि the online because Sindh has both online application and जो हमारे DCS से होता है, the online application में तो आपने सिर्फ pictures upload करनी होती है, right? उसमें you will find जो DAO की website पे जैसे ही online application आ जाएगी, you'll understand, you'll know कि आपने कौन से documents वहाँ पे सब upload करने हैं. For the TCS, उसके लिए आपके पास जो फॉर्म DAO की वेबसाइट पर आएगा उसके लास्ट में there's a checklist and you will find all your documents listed there जो आपने सारे भेजने होते हैं. You need to send 2 copies and if you're applying for both MBBS and BDS, you'll have to basically send 2 application forms. So one for MBBS and the other for BDS, right? So उसमें हमारे पास वही सारे जो हमारे documents होते हैं. So there's the metric certificate जिस पे golden normally stamp होता है. Then there's the metric mark sheet. There is the intermediate mark sheet or intermediate
सर्टिफिकेट बिकॉज आपको अभी तक इशू नहीं हुआ होगा, तो उसका आई रिकमेंड यू गेट योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स रेडी बिकॉज दे विल बी रिक्वायर्ड लेटर ऑन, right? Uske alawa, there are the your CNICs, your domiciles are very important. Your domicile, your PRC, both yours and your father's, they need to be of the province. यानी आपका कराची का और सिंध का होना चाहिए, आपके फादर का भी कराची और सिंध का होना चाहिए. That is normally what is recommended, and it is very important you get those done. About the attestation, so attestation हम लोगों को grade 18 officers की करवानी होती है, सिर्फ चाहिए होती है. You need to send 2 photocopies of your documents. So I recommend you get both of those, or actually get more documents, more photocopies, and get them attested, right? और IBCC attestation की जहाँ तक बात होती है, वो सिर्फ O levels की जो equivalency होती है उसकी IBCC attestation होती है. वो it's a entirely different thing. वो आपको because the people in O levels and A levels, they already know कि उनकी equivalency कैसे बनती है, और वो IBCC से attested होती है. Next we have the seat allocation day. Seat allocation day पर हमारे पास जो documents required होते हैं वो यही सारे होते हैं, except we also need an affidavit, right? That affidavit will also be in your prospectus, जो Dow probably upload कर देगा in a few weeks. और उसमें what you basically need to do is, it's around 100 rupees or 50 rupees. I think I got 100 rupees वाला affidavit. You need to print it out on a stamp paper. आपको ये किसी भी notary service किसी भी shop से आपको मिल जाता है जहाँ पे notary services provided हो, right? और उसमें then you have to get 2 witnesses and उसको आपने sign करना होता है, and you have to get that you need to submit that on the seat allocation day. And उस दिन seat allocation days are very simple. उसमें बस थोड़ा time ज़्यादा लगता है. बाकी you basically just go up to them, you give them your documents, they take your documents and they give you like a form कि हमने ये documents इस बच्चे के रख लिए हैं, and that they will get this at the end of their graduation. And I think that's all about our documents that we need for Sindh. Okay, I think Avia summarized it really well. Mohit and Alishba, is there anything different, any different document that you required for Balochistan or KPK? ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ क्वेटा जो है वो 2 मजीद उसमें डिवाइड हुआ है. एक क्वेटा अर्बन में आता है, एक क्वेटा रूरल में आता है. तो खास जो बच्चे क्वेटा रूरल के लिए हैं वो डीसी से एक फॉर्म लेंगे, और उसके ऊपर डीसी का सिग्नेचर होगा, और उस पर लिखा होगा, ये डिक्लेयर कर रहा होगा कि ये जो है बच्चा क्वेटा रूरल का है. क्योंकि नॉर्मली डोमिसाइल और लोकल क्वेटा के सेम होते हैं, तो उसमें रूरल और अर्बन की डिमार्केशन जो है वो डीसी करेगा. वो मस्ट होगी रूरल वालों के लिए, क्योंकि मेरिट का काफी डिफरेंस होता है दोनों डिस्ट्रिक्ट. बाकी चीजें सेम ही हैं जो बताई बिल्कुल. और इसके अलावा अगर केपीके की बात करें तो जो इन्होंने पीआरसी मेंशन किया है, केपीके में पीआरसी मस्ट, वहाँ पे आपको पीआरसी नहीं चाहिए. और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जो मतलब बैकवर्ड एरिया की सीट्स पे अप्लाई करेंगे उनको एक लोकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है. लेकिन जिस तरह भैया ने बात की, तो हमारे 3 डिफरेंट स्टेप्स हम जिस तरह अगर 2 स्टेप्स में डिवाइड करें, हमारा जो पहले जो स्टेप है वो ऑनलाइन वाला है. ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर दिए. दूसरे स्टेप में आपने केएमयू जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके. ऑल्दो वो कभी चेक करते हैं, कभी थोड़े चेक कर लिए, मतलब वो उनकी मर्जी है, वो ऑन द स्पॉट कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें. वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने ओरिजिनल, आपको कोई फोटोकॉपी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है. फिर उसके बाद जब तीसरा स्टेप होगा, जब वो कॉलेज वाले बुलाएंगे, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वो कॉलेज वाले आपको एक डेट देंगे कि आपने इस दिन कॉलेज आना है. उस दिन आप लोगों ने 2 एफिडेविट्स और अपनी सारी कॉपीज और अटेस्टेशन, ये सारी चीजें लेके जानी है, और वहां पे वो कॉलेज वाले अपने पास रख लेंगे. तो केपीके में ये 3 स्टेप्स में आ जाता है पूरा. Okay, I think you guys explained it really well, and I wish I had someone to explain it to me क्योंकि I went through hell. क्योंकि मुझे नहीं पता था कि domicile का, I knew कि domicile is very important. My elder sister is also in this education. लेकिन I'm originally from Peshawar, so hello Alishba, we are both from Peshawar. So like I had a different code in my CNIC. तो उसकी वजह से they said that I couldn't have my domicile made for Sindh. And that was something that was very traumatizing because I was done with all the procedure. The guys, do not ignore your domicile. Domicile का काम सबसे पहले handle कर लो. If you are from somewhere else, then you'll have to go somewhere else. So like I got my domicile made because I have been living in Karachi since the past few years, and the High Court passed a notice कि अगर किसी की residence इतने साल की है तो वो domicile बनवा सकते हैं. तो I was saved, but it might not be true for your case. As for O levels and A level students, I am someone who has done O levels and A levels. So uske liye you have to get your equivalency made on time. Again, do not ignore that. It is very important. They will not give you any other option. सही है.
And for that, for O levels and A level students, you need your equivalencies attested, O levels and A levels, and you need your O level certificates, no matter how many they are, 10th के भी 11th के भी, and you need your A levels के A levels का A2 का certificate जिसके अंदर आपके final grades आते हैं. So I guess that is summarized enough. Okay, so now guys, जी एक चीज मैंने ये मिस कर दी कि जब पहली लिस्ट आती है जो टेंटेटिव लिस्ट होती है ना, उसमें सब जी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किए होते हैं और फीस जमा की होती है उनके नाम होते हैं. तो उनमें फिर डीसी की तरफ से इंटरव्यू कॉल आती है सबको. तो फिर हमने उधर जाना होता है और अपने तमाम वो दिखाने पड़ते हैं कि आया हम लोग डोमिसाइल फेक तो नहीं है. तो लास्ट ईयर ये हुआ था कि इस पॉइंट पर भी डीसी की तरफ से वेरिफिकेशन में कुछ बच्चों के मसला था, जिस वजह से मजीद डिले हो गया था. तो कोशिश करें आपके कोई ऐसे डोमिसाइल में या लोकल में ऐसी चीज ना हो कि बाद में जिसका मसला बने, उसको पहले से सॉर्ट आउट कर लें. Okay, so again, इस बात से यही प्रूव होता है guys, do not ignore your domicile. Domicile is very important. अच्छा, उसके बाद okay, I really like this question क्योंकि मुझसे हर कोई ये पूछ रहा था after I got in Dow. तो अल्हम्दुलिल्लाह. तो like, what were your feelings on your admission day? Like, once you went into your dream university, I couldn't have imagined that I would get into Dow. Like hard work सब करते हैं, but किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता. So I'm really grateful. So I would love to hear about your feelings. के how did you feel? Like I just want to hear a concise overview. के what were your feelings when you went to your university for the first day, when you saw it for the first time and you realized that you will be studying there? Alright, so I was very happy जब I got into Dow. I was very happy because it was my dream college. मैं हमेशा से यहाँ जाना चाहती थी. My parents were very happy. बाबा मेरे साथ मेरे father गए थे and he was very happy. He was taking pictures and videos all the time. और it's basically it's a very surreal experience. मतलब आपको you get into your university that you've dreamed for a very long time and you step into it. I mean, I found Dow a little, chota, because I thought from the pictures it's going to be huge, but it was not. My school was bigger, and it felt weird, cause like, oh my god, this is kind of small. But I was really, really happy. I loved Dow, or I loved the people there, or it was very, it was very interesting. और बहुत मजा आ रहा था. I was very happy at that time. और the process इतना लंबा नहीं था, so I had time to like explore. And then we also had orientation, and orientation mein we had so many seniors over there, especially because I was as a pre-med I also used medangle, so I kind of knew a few people there jo medangle se associated the, and they were already there and they were helping us out. बहुत अच्छे my community मिली थी. And we got like a whole tour of the place, two places where as first years you don't really go, but the staff there was very nice and they let us in और उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था. It was a very fun experience and you will definitely love it. जी बिल्कुल. जब एडमिशन हो जाता है और बंदा पहली दफा जाता है, वाइट कोट सेरेमनी होती है, ओरिएंटेशन होती है, तो वो खुशी जो है वो बयान तो नहीं हो सकती, मतलब मगर एक्सपीरियंस हो सकती है. तो हम लोग का भी इसी तरह था. वाइट कोट सेरेमनी में गए, ओथ वगैरह था, और फिर थोड़ी बहुत रैगिंग जो होती है उसको भी बंदा एंजॉय कर रहा होता है. सो क्योंकि खुशी इतनी होती है कि वो छोटे छोटे मसाइल जो है तंग नहीं करते उस टाइम. और बस यही था एक्सपीरियंस. बाकी जब आप पहुंच जाते हैं मेडिकल कॉलेज में तो फिर शुरू में तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, मगर बाद में आपकी वो एक्साइटमेंट कुछ कम हो जाती है. सो बेसिकली कोई इसने कहा है, मतलब सही, मतलब जब पहले दिन हम लोग जाते हैं ऑब्वियसली वो जो खुशी होती है, एक तो इंसान की अपनी खुशी, दूसरे जो पेरेंट्स आपके एक्साइटेड होते हैं और उनकी जो खुशी वो चीज होती है, वो सारी चीजें जो है वो तो मैं कहती हूँ बंदा जब एक्सपीरियंस करता है तब उसको पता चलता है कि ये क्या चीज है. और उसके अलावा खैबर मेडिकल कॉलेज मेरा हमेशा से शौक था, ऑल दो मुझे 8 to 9 hours ट्रैवल करके जाना पड़ता है हॉस्टल, और अब मुझे थोड़ा सा एहसास होता है कि कहीं करीब तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी ड्रीम कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. Like I feel like आप अपनी dream college के लिए कुछ भी कर सकते हैं, because I am really jealous of the people who had their white coat ceremony. So I don't usually say it to them, but I'm really jealous of the people who had their white coat ceremony. We didn't have it. We just had a plain old orientation day. So I am happy for you guys. Okay. उसके अलावा as Avia said, as Moise said, Alishba said कि ये जो feeling होती है ये उसी वक्त experience होती है. And I hope of to all our premiers who are watching this podcast कि if you have worked hard enough, तो आप भी ये सब कुछ experience करें, because there is nothing like it. अपने hard work को pay off होता हुआ देखना. सब बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं. वी हैव बीन वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स आवर गोल
अपने मेट्रिक ओ लेवल्स के टाइम से। तो ऑफ कोर्स हर किसी को चाहिए होता है, लाइक वी ऑल वांट टू गेट इनटू आवर ड्रीम यूनिवर्सिटी, सो आई होप फॉर दोस हु हैव वर्कड हार्ड इनफ यू गेट इट। Okay, now before we end this podcast, it was honestly a very fun podcast. Before we come to the end of it, I just want you guys to give an advice to our pre-meds. They have already gotten their MDCAT scores, so we don't know. Okay, and they are kind of aware कि वो कहाँ खड़े हैं. The ones who have gotten high marks, they're aware they'll get into their dream universities, but there are certain pre-meds who are uncertain कि उनका होगा कि नहीं होगा. Whether we are talking about MBBS or BDS or anything they wanted to get into. So, do you have an advice for our pre-meds who didn't get their desired results? ताकि we can get it across कि it's not the end of the world. So Abia, you can go first. Okay, so personally for me, because I gave my MDCAT twice, right? पहली दफा में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे. I had 181 and I was very very happy. I was like in the top, I don't know, 50 I guess. So I was very happy about that. Like in the second time, we had a reconduct. I lost all my motivation and I dropped down, and I was very sad about it. It wasn't basically I didn't get my desired result either. लेकिन you need to understand कि देखें आपने जितनी आपने मेहनत कर सकते थे आपने मेहनत की. You gave your best, right? Now you need to wait, right? There were so many people with me जिनको DAO से calls आई थी. They wanted to get into DAO and उनको DAO से calls आई थी because a lot of people they kind of dip, right? So some people उनका AKU में हो जाता है, so they go for Aga Khan. कुछ लोग they prefer JSMU over over DUHS, so वो लोग भी remove हो जाते हैं from like the list. तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पास number आ सकता है. The other thing is all government universities here are really good, right? All DAO is really good, JSMU is amazing, KMDC is amazing, and all the other private universities are really amazing as well, like Ziauddin. I've heard a lot about Ziauddin, right? So do not lose hope कि आपका desired result नहीं आया and that you won't get into your dream college. First off, because it's very it's kind of tentative right now. आपको शायद मिल जाए in your dream college, inshallah. But again, आपका main focus होना चाहिए कि I want to be a doctor, I want to be a dentist, and I will do my best in whatever university I land into. That's all I can say about this. यहाँ पर भी बच्चों ने दे दिए हैं अभी और उनको अपना स्कोर भी पता है, मगर यहाँ पर अभी एक और दरवाजा खुला होता है एचईसी का. तो वो टेस्ट अभी तकरीबन 10 दिन बाद है आज से. तो जिसका एमडीकैट पास है या मतलब थोड़ा भी अच्छा स्कोर है तो वो उम्मीद नहीं छोड़े, क्योंकि एचईसी में अगर स्कोर कर ले और एचईसी में सिर्फ टॉप 500 कैंडिडेट्स में आ जाए तो काफी बाहर की यूनिवर्सिटीज, उसमें डाउ भी आती है, आर्मी मेडिकल कॉलेज भी आता है, आरएमयू आता है, तो अराउंड 40 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सीट्स मिल जाती हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को. तो ये काफी एक अच्छी बात है कि मतलब स्टेप्स में बंदा आता है, या होगा या नहीं होगा ये वाला मामला इधर नहीं होता. एमडीकैट में नहीं होगा तो एचईसी में होगा, अगर आप बिल्कुल खत्म है तो फिर उसमें नहीं होगा. और दूसरी बात ये कि 2 दफा 3 दफा रिपीट करने से गुरेज करें, क्योंकि अ, यही एक फील्ड नहीं रह गई दुनिया में. और अभी आगे जब हम 5 साल बाद ग्रेजुएट होंगे तो मजीद ये सेचुरेट हो जाएगी. तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ इसके लिए अगर 3 साल या 2 साल रिपीट करके आप मेंटल हेल्थ खराब करें, हाँ अगर शौक है तो जरूर डॉक्टर ही बने. मगर अगर आप सिर्फ दूसरे उसमें या कंपटीशन की उसके लिए आ रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं तो इससे बेहतर डिग्रीज भी हैं जो कि आप ले सकते हैं. अगर बात करें अभी यहाँ पे तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे तो जो एमडीकैट हो गया, जो स्कोर्स आने चाहिए, इसका मेरिट काफी हाई है केपीके का, क्योंकि टेस्ट मार्क्स भी काफी ज्यादा है. तो मेरे हिसाब से हर चीज का एक टाइम होता है ना, मतलब अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान को एक ही टाइम पे सारी चीज मिलेगी ना. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे साल नहीं होगा. मतलब आई माई सेल्फ रिपीटेड, मेरा फर्स्ट टाइम बीडीएस में एडमिशन हुआ था जो कि मैंने ड्रॉप कर दिया था, मैंने दोबारा रिपीट किया था. तो ऑल्दो ये चीज मुश्किल, इंसान को उस टाइम पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी होती है, यार मैं नहीं कर सकता, मेरे बहुत मसाइल हैं, शायद मैंने पढ़ा नहीं था सही तरह, या मैं कर ही नहीं सकता. तो बात सिर्फ इतनी है कि बस थोड़ा सा सब्र रखना है और अपने टाइम का इंतजार करना है. और मोहित ने कहा बाकी भी काफी सारी फील्ड्स हैं, लेकिन बस सब्र से काम लें और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी बहुत टाइम कंज्यूम, अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लिस्ट लगने में, फिर फर्दर उसमें से बच्चे अलग होंगे, फिर सारी जो चीज फाइनल होगी. तब तक सब्र करें और अपने जो आगे डिसीजन है कि मतलब जो चीज आपके शौक है बस उसको परस्यू करें. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतर होगा सारों के इसमें जो भी है.
Yeah, those were some really great words. That was a very good advice. Yeah, I also feel like if you really love your profession, if you really want to go for MBBS or BDS, then give it your all. But as Moise said, this is not the only field in the world. There are other allied health sciences as well. If you really want to be in the health field, you can go for allied health sciences. Maybe it was God's plan कि those were better for you. तो डिस्करेज होने की कोई बात नहीं है. ऑफ कोर्स ड्रीम होती है, अगर वो नहीं पूरी होती तो हर किसी को दुख होता है. बट देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस एंड वट एवर अल्लाह हैज प्लान फॉर यू दैट इज वो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है. एंड देयर इज नो डाउट इन दैट. बाकी उसके अलावा जस्ट हैंग इन देयर. अगर आपका आपके लिए लिखा हुआ होगा तो यू विल गेट इट. Baki, I think our speakers have given really great advices. Now we are officially at the end of this podcast. Thank you to all our speakers from Sindh, KPK, and Balochistan for giving such a great insight into the admission process in all three provinces. And as I said in the beginning of the podcast, we will have a special episode for Punjab. And in that episode, we will be talking about everything admission related to the admission process in Punjab, because we wanted to do it separately for Punjab. Baki, as for the speakers, thank you for listening. Thank you for being with us till the end. I hope we have given you an insight that you wanted to get into the admission process. I hope everything's better, everything is clear for you. And again, as I said before, hang in there, you will get it. If you have worked hard enough, if you have worked smart enough, you will get it, inshallah. Thank you so much, and Allah Hafiz.